तो अब हम आगे की शुरुआत करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद ही आप योग सूत्र के जो बाकी वीडियोस हैं उसको देखिए पहले। तो इसमें हम वो बातें करेंगे जो नॉर्मली योग साधना से पहले शुरुआत की जाती है। तो हम सभी को पता है कि प्राचीन काल से ही लोग योग के अभ्यास में लगे हुए हैं और अपने जीवन में उन्नति करने के लिए और उसमें समृद्धि प्राप्ति करने के लिए योग का अभ्यास करते रहे हैं। योग का पालन करने में व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त हो सकता है। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला भावना योग और प्राणों को संयमित करके जो मार्ग है वह प्राण संयम योग। तो इस तरीके से भक्ति और अष्टांग योग को आपस में मिलाकर या उसके सामंजस्य से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब ये दोनों ही साधन मोक्ष साधन कहे गए हैं और इन दोनों साधनों से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि पतंजलि का योग दर्शन योग के क्षेत्र में जो लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं या अपना करियर बनाना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि बिना इस ग्रंथ के पाठ के या इसको बिना पढ़े या समझे आप आगे नहीं बढ़ सकते। यह ग्रंथ 4 अध्यायों में विभाजित है। तो 4 अध्याय हैं इस ग्रंथ में, जिनमें से प्रत्येक योग दर्शन का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। तो इन चारों अध्यायों में आपको योग के अलग अलग सोपान जो हैं वो समझने के लिए बताए गए हैं। तो चारों अध्यायों में अलग अलग चीज़ें आप समझते हैं और फिर चारों अध्यायों को जब पूरी तरह से आप समझ लेते हैं, उसका पाठन कर लेते हैं, पठन पाठन होने के बाद आपको योग को समझने में बहुत ही आसानी होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि इतने सारे विद्वान विभिन्न भाषाओं में योग दर्शन पर व्याख्यान देते हैं और इन व्याख्यानों का मानवता को लाभ क्या होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय का जो समय है वह मीडिया का समय है और अलग अलग लोग इन व्याख्यानों को देते हैं, बताते हैं। तो उसका लाभ साधारण मनुष्यों के लिए क्या है, क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर सुलभता से मिल सकता है। जब कोई व्यक्ति योग का अध्ययन अपनी मातृभाषा में कर सकता है तो वह उससे जुड़ी सभी जानकारी को आसानी से समझ सकता है। तो जब भी आप योग साधना को अपनी मातृभाषा में समझेंगे और उसका पालन करना चाहेंगे, तो अगर वही जो ज्ञान है अगर आपको आपकी मातृभाषा में दी जाए तो आपको बड़े आराम से वो चीज़ समझ में आ जाती है और फिर आप उसका पालन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए तीसरे अध्याय और तीसरे सूत्र में विभिन्न अनुभवों का वर्णन किया गया है। यदि अपनी भाषा में प्रस्तुत किया जाए तो अधिक सरलता से उसको समझाया जा सकता है। यह सुलभता योग के गहरे अभ्यास और समझ की दिशा में मदद करती है, जिससे योग साधक की यात्रा समृद्ध हो जाती है। तो यह बहुत ही ज़रूरी है कि हम योग को जो जिस भाषा में भी लिखा हुआ है, जैसे महर्षि पतंजलि ने संस्कृत में भी बहुत कुछ लिखा है और तमिल में भी लिखा है, तो जो दोनों भाषाओं को समझ सकते हैं उनके लिए तो बड़ा ही अच्छा है। लेकिन जो दोनों भाषाओं को नहीं भी समझ सकते हैं, एटलीस्ट संस्कृत समझ सकते हैं या तमिल समझ सकते हैं, तो उनको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि वह कहना क्या चाहते हैं। सभी सृजन और उसका विलय ईश्वर द्वारा ही किया गया है। इन संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जिसका सृजन हुआ है या जिसका विलय होने वाला है, उसको बनाने वाला ईश्वर ही है। यदि हम ईश्वर के रूप और उसकी भक्ति को अपनी भाषा में समझ सकें तो इससे बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। क्योंकि अगर उस ईश्वर की भक्ति के बारे में हमें बताया जा रहा है कि आप भक्ति कीजिए और इस भक्ति को करने से आपको क्या प्राप्त हो सकता है, तो अगर मैं अंग्रेजी में बोलूँ या किसी ऐसी भाषा में बोलूँ जो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो आप क्या समझेंगे, कैसे करना है। लेकिन वही आपकी भाषा में बोलूं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक महान योगी चाहे वह कितना भी प्रतिष्ठित हो, हमें इस यात्रा में बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन कर सकता है। योग का दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह हमें गहरे विचार प्रदान करता है।
जब आप योग सूत्र पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको बड़े ही गहरे विचार देता है ये। आप उस पर मनन चिंतन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। संस्कृत जिसे देवताओं की भाषा माना गया है, भले ही कठिन प्रतीत हो, लेकिन यह कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं करती। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि यदि योग सूत्र हमारी अपनी भाषा में उपलब्ध हों तो हम उन्हें और भी सुंदर और सरल ढंग से समझ सकते हैं। हालांकि यह किसी अन्य भाषा में हो तो योग सूत्र के हर श्लोक का अनुवाद समझने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और यह अनुवाद इतना सरल होना चाहिए कि सभी साधारण रूप से जो लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको समझ सकें। तो प्रस्तुत पाठ जो है, ये पूरा वीडियो जो आपके सामने आ रहा है, वह इसी चीज़ को साधारण रूप से समझाने की कोशिश है। और इस पूरी प्रक्रिया में हमने कोशिश ये की है कि भाषा को जितना साधारण रखा जा सके, सरल रखा जा सके, ताकि आपके समझ में आए, वो रखा जाए। और पिछले जो 30-35 वर्षों से मैंने इस पे शोध किया, या जो भी साधनाएं मैंने की, या जो कुछ भी सिखाया, यह सारी चीज़ें मिल के आपके सामने आ रही हैं। तो इसको पूरे मनोयोग के साथ आपको समझना है और इसको आगे ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि योग दर्शन का एक थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय हो जाए, क्योंकि जब भी आप योग दर्शन की बात करते हैं तो आपको लगता है कि आखिर ये है क्या। तो योग दर्शन को वास्तविक रूप में प्रकृति, इसके आध्यात्मिक विशेषताएं, योग का फल, योग के व्यवहारिक उपायों को बहुत सरल ढंग से समझाया गया है। अब कुछ ग्रंथों में 196 सूत्र हैं, कुछ ग्रंथों में 195 सूत्र हैं, बट नॉर्मली जो ग्रंथ हैं उसमें आपको 195 मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें एक सूत्र आपको अलग मिलेगा, 196 सूत्र मिलेंगे। तो हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम इन 4 जो अध्याय हैं, जिनको हम 4 पाद भी कहते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे आज। तो सबसे पहले जो आता है वह है समाधि पाद। तो समाधि पाद यहाँ पर क्यों पहला है? क्योंकि अगर आप उत्तम साधक हैं, आपने सारी साधनाएं पहले से साध रखी हैं, तो उत्तम साधक होने के चलते आप सीधे सीधे समाधिष्ठ हो सकते हैं, और किस अवस्था में आप हैं और कहाँ पहुँचे हैं बड़े आराम से आप समझ सकते हैं। तो इसके पहले भाग में 51 सूत्र हैं, और यह योग के उद्देश्य, उसकी परिभाषा के बारे में आपको बताते हैं। चित्त क्या है, चित्त की वृत्तियाँ क्या हैं, फिर चित्त के विक्षेप क्या हैं, ईश्वर क्या है, फिर ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है, ओमकार का स्वरूप क्या है। ये सारी चीज़ें आपको पहले ही अध्याय में महर्षि पतंजलि बताते हैं। उसके बाद आता है साधना पाद। तो साधना पाद में शुरुआत होती है मध्यम साधक के लिए क्रिया योग से, और फिर अधम साधक के लिए अष्टांग योग से। बीच में आपको क्लेशों के बारे में बताया जाता है कि क्लेश क्या हैं, उन क्लेशों को किस तरह से कमज़ोर करके, न्यून करके आप पूरी तरह से बाहर कर सकते हैं, और कैसे आप क्लेशों से मुक्त हो सकते हैं। विवेक ख्याति क्या है, विवेक ज्ञान क्या है, यह सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो ये आपको साधना पाद में मिलता है। फिर आता है तीसरा पाद। तो तीसरे भाग में शुरुआत होती है धारणा, ध्यान और समाधि से, और फिर संयम के मार्ग पर चलते हुए अलग अलग सिद्धियां जो आपको प्राप्त होती हैं, उसी के बारे में पूरा ज्ञान यहाँ पर दिया गया है। और फिर अंतिम भाग जो है वह है कैवल्य पाद। कैवल्य पाद में विस्तृत रूप से अंतिम मुक्ति के रूप को समझाने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से 4 पादों में या 4 चैप्टर्स में आप देखेंगे कि महर्षि पतंजलि ने बड़ा ही सुंदर तरीके से आपको यह बता दिया है कि हमें आगे किस तरह से आगे बढ़ना है। तो महर्षि पतंजलि के योग सूत्र एक व्यापक रूप से आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, और इनको विस्तार पूर्वक हमें समझने की आवश्यकता है। तो अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया, इसको आप ध्यान से चाहें तो एक बार और सुन सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आई होंगी जो नॉर्मली आपको कहीं और मिलेगा नहीं। तो 1-2 बार और सुनिए ताकि आप ठीक से ध्यान लगा सकें। So now let us start and understand the same thing which I have explained in Hindi, now in English. So since the beginning of the time, people have sought solace in yoga to advance in life and attain prosperity.
So yogic science is not a new science, and definitely one has to understand that whenever we discuss about yoga or whenever we discuss about the sadhana, it is an integral part of Sanatana Hindu philosophy, and whenever you had difficulties in the life, whenever you had stress in the life, yoga is the only answer to it. So by practicing yoga, one can find success and inner fulfillment. So when you start practicing yoga, it touches all the physical, emotional, social and spiritual levels of your personality, and it gives you happiness and bliss. So Bhavana Yoga and Pranasayam Yoga, these are the two paths. So Bhavana Yoga is mainly done with the feelings and emotions, and Pranasayam Yoga is done after completely controlling the breath. So Bhavana Yoga can be understood with the example of Bhakti Yoga, where when you perform Bhakti, you only concentrate on the emotions. At the same time, when you talk about Ashtanga Yoga, then you talk about Pranayama, Hatha Yoga, Pranayama. So Bhavana Yoga and Pranasayam Yoga. But the ultimate aim of both the paths or both the ways remains the same, and that is the experience of the Supreme Divine, or the path which can take you close to the Supreme Divine Higher Self. So Maharishi Patanjali's Yoga Darshan is an essential text for anyone serious about pursuing a deep practice in yoga. So if you want to practice, or if you want to go deeper in the field of yoga, Maharishi Patanjali's Yoga Darshan or Yoga Sutra, what we normally say, is one of the most authentic and one of the most important texts, because it gives you in-depth information about everything about yoga. This text is mainly divided into 4 chapters, each providing a detailed explanation of yogic philosophy and the practices of yoga. A natural question arises: why do so many scholars deliver lectures on yoga philosophy in different languages? And what benefits do these lectures offer to the humanity? Now suppose I am speaking to you in the English language. So people, those who know Hindi and other Indian languages, may not be able to understand everything. So the language of communication has to be the language of understanding also, because whichever language you understand better, if this communication is given in that particular language, naturally you will understand the concept in much better way. So the answer lies in the accessibility. When a person can study yoga in their own language, suppose you know Hindi, so you learn yoga in Hindi. If you know Tamil, Telugu, Kannada, any language, any Indian language, if you learn in that particular language, you will understand it in a much better way. So a person who learns yogic philosophy in their own language, they can grasp the subject more easily, absorb all the relevant information, and follow its practices more effectively. For instance, the 3rd chapter in the 3rd sutra of Patanjali's Yoga Sutra describes various spiritual experiences. And what exactly is that? So about the samadhi. So what exactly is the swarup of samadhi? That is explained. But if I tell you in English, and person who doesn't know English is sitting and listening to me, he or she may not be able to grasp the actual essence of what I am talking. So it is very much important that the language of communication should be the language of understanding of the person. So that is the reason all the videos which I am making for you people, it is in Hindi for Indian audience, and in English also for other people, those who don't understand the Hindi language. Now understanding the form and dedication to God is fundamental, and studying the different ways and methods in your own language can make your understanding much better. So yoga is nothing but yoga is the science of soul. So whatever information is given in Sanskrit or in the languages which have come out from Sanskrit or any other language,
If it is given in that language, the understanding will be far better. So regardless of how a great yogi may be, they can guide us more effectively when their teachings are made accessible in simple terms in our own language. Yoga plays a central role in philosophical discourse because it connects mind, body and spirit. Now, whenever we talk about philosophy, whenever we talk about the science of soul, there is nothing better than yoga. And yoga is a science which can connect you to your own self. It is a science which teaches body to perform, mind to absorb and soul to realize the ultimate self. So it is very much important that it has to be practiced in your own understandable way. Although Sanskrit, the original language of Yoga Sutras, is often seen as complex, even though it is not complex, it is considered the language of gods and thus deeply revered. However, to make these teachings universally understandable, translations of the sutra in simple language are essential, so that anyone regardless of the background can grasp the knowledge. So if you want to understand the true meaning of the yogic philosophy, it is very important that it has to be given to you in your own language, because you are more connected with your own language. So that is also one very important thing. So that is the reason we are making this whole thing into your own language. So now let us understand some important information about the Yoga Sutras. So we all know the author of Yoga Sutra is Maharishi Patanjali. And when we see the different texts which are published now, so some texts have got 195 sutras, some have got 196 sutras. Even 195 sutras text also contains everything, but only thing is the extra sutra, which is 196th one, is added, and some people have explained it with the Sandhi Vichhed, that's all. Now this 195 sutras are divided into 4 different chapters. So 4 different chapters explain all and everything about the yogic philosophy or the yogic system. So let us understand one by one what all things are given in the sutras and what all things are given in the different chapters. So the first chapter is called Samadhipad, and when we enter in Samadhipad, it starts with the definition, it talks about the vrittis, it talks about the chitta vrittis along with chitta vikshepas, chitta prasadanam, it talks about the omkar, it talks about the ishvara, it talks about the samadhi, sampragyat, asampragyat samadhi. So it gives you all the information about the samadhi in the first chapter. And why it is given like that? Because if you are a uttam sadhak and you have already done the preliminary practices of yoga, just by following the first chapter you can enter in the state of samadhi, and you can experience also what all things can be experienced during the practice. After that, the next chapter which comes is sadhana pad. So sadhana pad is the applicable part of that, and mainly it starts for the person who is of madhyam sadhak with the practice of kriya yoga. Now this kriya yoga is very, very important to weaken the kleshas, and there are other practices which are explained which can not just weaken the kleshas, along with weakening they can remove the kleshas. So they can remove the kleshas. Then what all different aspects of life is explained, so everything is again given there. Along with that, Ashtanga Yoga in detail is explained in the second chapter. So starting from Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, Samadhi, everything is explained in detail, which we will be seeing in our future videos. Now the third chapter talks about the Dharana, Dhyan and Samadhi and Sanyam. Then it talks about the importance and significance of Sanyam on different things
and when you perform that, the different siddhis and the powers of yoga you accumulate. That is explained. After that, the last chapter talks about the kaivalya or the liberation. So these 4 chapters, they give you complete information about the yogic philosophy. Maharishi Patanjali's Yoga Sutras are comprehensive guide to the both theory and the practice of yoga. So even though it may appear that it is just a philosophy, but for a learned scholar, it gives you a very clear-cut path that how it has to be practiced and what all things has to be followed. So by explaining the core aspects of yoga in detail and accessible way, this text serves as the invaluable source for individual to learn yoga sadhana. So now let us try to understand some other things. Like whenever we talk about Maharishi Patanjali, whenever we speak about Maharishi Patanjali, there is always a controversy. Like our normal thinking, our normal information about Maharishi Patanjali is that he has written a Yoga Sutra, he has done commentary on Panini's Mahabhashya. So he wrote Mahabhashya. So, and then when we talk about the 18 Siddhas tradition of Tamil Nadu, there also we see one Maharishi Patanjali. So basically they are not different. तो महर्षि पतंजलि के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो आपके समझ में आना चाहिए कि चाहे वो महाभाष्य उन्होंने जो लिखा अष्टाध्यायी पे, या फिर तमिल सिद्ध जो हैं 18 सिद्ध, वहाँ पर उनका जो काम है, दोनों एक ही हैं. सो दे आर नॉट डिफरेंट एक्चुअली. ओनली थिंग इज आवर इंफॉर्मेशन अबाउट महर्षि पतंजलि इज़ वेरी मच लिमिटेड. It is very, very limited. We think that Maharishi Patanjali has done work only on Yoga Sutras, and other than that nothing is done. Then again we limit him to the medicine of one particular side, that is Ayurvedic side, but we always forget that the medicine part which he has written is called Siddha medicine. His contribution is more towards the Siddha medicine. So let us not get confused with those things. Maharishi Patanjali, he has written so much in Yoga Sutras about yoga, and in Tamil he has written a text called Jnanam, where he talks about the Kundalini, about the Shiva, about other aspects of yoga which he has not used in the Yoga Sutras. So if you combine both the things, you will understand what he talks, what he is exactly telling. So the first thing what he says is he is the author of Mahabhashya, that he has written commentary on Panini's Ashtadhyayi. So as a teacher, as a guru, he talks about the Sanskrit and its purity and the importance of language, so that you understand the language and then utilize that language for understanding the Yoga Sutras. Then second thing what he talks is, he talks about Yoga Sutras. So then he is the author of the Yoga Sutras. Third is he is a medical scholar. Now he is a medical scholar and he talks in detail about the medicine. So you can take that medicine as a Ayurveda also, you can take that medicine as a Siddha also, because he did not say that it is Siddha or it is Ayurveda. You have made it. And then finally he belongs to the lineage of Tamil Siddhas. So his name is taken with lot of respect, with lot of reverence in Tamil Siddhas. And there he has written the book or the Granth which is called Jnanam. So now we have understood that these are the 4 important parts of Maharishi Patanjali which he talks. तो पहला क्या है, महर्षि पतंजलि जो हैं उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी पे महाभाष्य लिखा संस्कृत में. दूसरा उन्होंने योग सूत्र लिखा. तीसरा मेडिकल स्कॉलर थे, तो उन्होंने आयुर्वेद पे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन आयु की वृद्धि करने वाले विज्ञान पर लिखा है. तो उसे हम सिद्ध मेडिसिन भी कहते हैं, और आप चाहें तो उसको आयुर्वेद भी कह सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया है क्योंकि जो ग्रंथ है वो तमिल में है. और फिर उसके बाद
उनका नाम तमिल सिद्धों में भी लिया जाता है। तो तमिल सिद्धों में उनका नाम बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ लिया जाता है, क्योंकि वह एक तमिल सिद्ध कहलाते हैं। और इस संसार में उनका जन्म योग के प्रचार प्रसार के लिए हुआ। तो वो पूरा जो उनकी माता गुणिका का पूरा जो आप उनकी पूरी कहानी जो सुनते हैं, वो तमिल से सुधर के आप तक पहुंची है। तो इसीलिए ये आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतना इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत है। अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को बाकी योग सूत्र को पढ़ने से पहले या सुनने से पहले समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो थिंग्स आर वेरी क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द योग सूत्रास. So from here you all can start following the first sutra, then second sutra, and continue with the practice. Now if you have any doubts, if you have any doubts regarding the understanding of the sutras, you can personally message me or contact me. Namaskar.